Yes, it's exactly 11:59 now. We are going to start the class in 1 minute. Hello, everyone. Hello, students. So before starting my class, I'm going to ask you one simple thing that I always do. Let me know if I have any, technical glitches. Okay, if I'm perfectly audible and visible or not, just let me know so that we can have the class in peace. Okay, yes, my students, please answer in the poll if I'm audible and visible or not. Screen is visible or not, along with me. Okay, so everything is clear, then we are good to start. All right? Okay. All right. So, yes, what we had done in the last class, that is yesterday, we have solved some of the questions from Plant Kingdom. Okay, so today we are going to solve some more. Yesterday, I had put a more emphasis on algae and bryophytes. Today, I will be putting more emphasis on pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Okay, so please remember, Plant Kingdom might feel, a bit difficult, but let me tell you, if you compare and study, it will be much easier. Okay, just like remember what are the things that happen in bryophytes, what happen in pteridophytes, gymno and ancho. Just make chart out of it and make the differences. ठीक है, what you will study in bryophyte, what you will study in algae. तो ऐसे आप एक chart बना के पढ़ोगे, so then it will be very much easier for you to remember. Okay, so चलो बेटा, let's start our today's class. Then it's exactly 12:01. Okay, so which is called as a living fossil? It's very easy. Okay, I'm going to launch the poll. Just see the options: ginkgo, cycas, sicova, all of the above. Okay, so I'm going to launch the poll. I know everybody is going to answer it correctly. Yesterday I had taken very difficult questions. Today also I have kept here and there थोड़ा easy easy questions होना चाहिए ताकि आपका spirit बना रहे, है ना? Okay, so please choose the correct answer according to you. Okay, आप जो चूज करें वो करेक्ट होना जरूरी नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू यू करेक्ट होगा. ठीक है. Okay, living fossil. Somebody has chosen something that is wrong. That's showing wrong in poll. Okay, no problem. We are going to study it now. Okay. All right. And I want answers from YouTube students also. Why are you here? You are here to learn, right? Then please respond ना बेटा. आप respond कीजिए chat box में. Okay. Because we are solving question and answers, and I want everyone to be active here. Okay. So I have ended the poll, and I can see most of you have chosen option A as their answer. So let's see which is the correct one. So what do you mean by fossil? Okay, can anybody tell me what is fossil? Yes, in the chat box. Only 4 members are here. Okay, so मैं ही बता देती हूँ. तो क्या होता है ना, if you see in the evolutionary history, आप जब evolutionary history देखते हो तो कुछ भी जो पुराने जमाने में रहा है, ठीक है, अगर वो अभी भी है, ओके, वो अभी भी है, तो उसको हम बुलाते हैं लिविंग फॉसिल. अगर जो पुराने में जमाने में हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, तो वो डेड फॉसिल है. वो तभी डेड हो गया था, हमारे लिए बस एक डेड फॉसिल है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डायनासोर्स. ओके, डायनासोर्स जो थे वो पुराने जमाने में पता नहीं कितने ही हंड्रेड्स ईयर्स के पहले थे. बट अभी तो डायनासोर्स नहीं है, बट अब आपको मिलते हैं डायनासोर के बोन्स, एंड दे एक्ट एज अ फॉसिल्स टू अस. सो बिकॉज ऑफ दोज बोन्स वी विल बी कंसिडरिंग दैट या डायनासोर्स ऐसे थे, इनमें ऐसे स्ट्रक्चर था, ऐसा बोन स्ट्रक्चर था. सो दैट इज फॉसिल. ओके, बट in gymnosperms, there is one living fossil, that is ginkgo. Okay, ginkgo is the name of the living fossil. Apart from that, a cycas is again on one of the gymnosperms. Sicova is one of the gymnosperm, but it is the tallest tree. Okay, it is the tallest tree which belongs to gymnosperms. Okay, so answer for this question is one, ginkgo. So you will learn more about ginkgo here. So what is a living fossil? Ginkgo biloba, also called as maiden hair tree. Please remember, ginkgo को हम बुलाते हैं maiden hair tree. ठीक है. So he is also referred to as living fossil because it is the only remaining representative
ऑफ अ पेरिश्ड बोटानिकल फैमिली गिंकोएसी। पेरिश्ड मतलब क्या, पेरिश हो गई है, वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। कौन सी फैमिली नहीं है? गिंकोएसी इज नॉट एग्जिस्टेंट इन दिस एरा या फिर इन दिस ईयर, बट उनमें एक प्लांट है। ओके, देयर इज ओनली वन प्लांट विच इज लिविंग इन ऑल ऑफ दिस फैमिली, दैट इज गिंको बाइलोबा। ठीक है, सारे ही उनमें पेरिश हो गए, सिर्फ ये एक लिविंग है, तो इसीलिए इसको बुलाते हैं हम लोग लिविंग फॉसिल। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, सो बोटानिकल फॉर्मूले गिंकोएसी सारे ही पेरिश हो गए। पेरिश मतलब व्हाट? नॉट एग्जिस्टेंट नाउ, या फिर आप इजी वर्ड्स में डेड हो गए बोल सकते हो, या फिर नहीं है अभी। ओके, अभी के लिए नहीं है। और कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग ट्रीज। ठीक है, तो ये जो गिंको बाइलोबा है, इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं बेटा? इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पीशीज। ओके, एज आई हैव टोल्ड यू, दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी लॉन्ग ईयर्स बैक, बहुत साल पहले हुआ करते थे। तो उनमें ही एक है जो अभी तक जिंदा है, अभी तक ये सांस ले रहा है, दैट इज गिंको बाइलोबा। क्लियर? So living fossil is ginkgo. I hope this is clear to everyone. Now coming to gymnosperms. Gymnosperms are mesophytes, hydrophytes, xerophytes, and halophytes. You have to answer the question. I'm going to launch the poll here. Please make sure that you answer in your poll. You might be feeling like, yeah, it's a very easy question. ऐसे मैं solve कर लूंगा, but थोड़ा दिमाग लगा के solve करना. Okay? No need to hurry here. जल्दबाजी में यूजुअली काम बिगड़ जाता है ना? Okay. So think and then answer. I have launched the poll. Please make sure that you answer in the poll. Okay? All right. Somebody has chosen some option which is totally wrong. हाँ, कुछ ने सही चूज किया है. Okay, I can feel that people are learning. Okay, right. Okay, students. All right, I have given enough time. और ज्यादा टाइम में इस क्वेश्चन पे नहीं डालना चाहती. Okay, तो देखो बेटा, जिम्नोस्पर्म्स क्या है? आपको देखते ही लगता होगा कि हाँ, जिम्नोस्पर्म्स आर मीजोफाइट्स. Okay, before entering into that, let me tell you the word, the meaning fight. Okay, usually phytes are refers to plants. Okay, phytes are refers to plants. Okay, now you look into the word here. Halo means saline. Okay, halo means saline. So halophytes are those plants who are, salt condition loving. ठीक है, जिनको सॉल्ट में रहना पसंद है, सॉल्ट सेलाइन कंडीशन में रहना पसंद है, वी कॉल देम एज हैलोफाइट्स. व्हाट आर जीरोफाइट्स? Okay, xerophytes are those plants who are present in extreme conditions where there is a scarcity of water or there is no availability of water. Okay, availability of water nahi hai, extreme temperatures, high temperatures. In those cases, the plants will be, living are called as xerophytes. I will give you an example of xerophyte like Apuntia. ओके, अपोन्शिया हो गया. ठीक है, देन एलोवेरा. एलोवेरा तो सबको पता है, दैट इज वन ऑफ द जीरोफाइट. ओके, क्यों जीरोफाइट के अंदर देखो बेटा, क्योंकि उनके पास वाटर हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, वाटर जब भी मिलता है उसको म्यूकस फॉर्म में, जेलाटिनस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके अपने बॉडी में स्टोर करते हैं, ताकि जब भी उनको मौका मिले या फिर जरूरत हो तो यूज करें. ठीक है, दोज आर जीरोफाइट्स. Okay, so halophytes are salt-loving plants. Xerophytes are present in extreme conditions, and hydrophytes are those plants which are present in water. Okay, the aquatic plants can be called as hydrophytes. Okay, now you might be wondering, ma'am, what are mesophytes? Mesophytes are those plants which are present on land. ओके, लैंड के ऊपर होते हैं. तो आप बोलोगे कि मैम टेरिडोफाइट्स भी मेसोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स भी मेसोफाइट्स हैं, एंड यू नो व्हाट, एंजियोस्पर्म्स भी मेसोफाइट्स हैं. हाँ, वो तो है बेटा. ओके, वो तो है, क्योंकि हम सिर्फ लैंड को कंसिडर नहीं करते. सिर्फ लैंड में रहना काफी नहीं है. लैंड के अंदर जो लैंड के कंडीशंस होते हैं उनके साथ वो बहुत कंफर्टेबल हों. ओके, एनवायरमेंट में बहुत कंफर्टेबल हों. ओके, व्हाट इज दैट एनवायरमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? Okay, so availability of water. Okay, normal temperatures. Okay, normal temperatures. Consider India. In India में जो normal temperatures हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना, सारे plants, वो सारे mesophytes हैं. For example, I'm looking at a coconut tree now. That coconut tree is a mesophyte. Okay, and then I'm looking at some other plant, papaya plant, castor plant. These are all mesophytes. Okay, they're freely living on the land. They're very comfortable. They don't need any extremities. या फिर उनको ऐसा जरूरत नहीं है कि हाँ भाई पानी ही पानी चाहिए, या फिर ऐसा नहीं है कि उनको हाँ भाई हाँ सॉल्ट ही चाहिए. ओके, these are normal, they are normal plants. But
Okay, so this is about mesophytes. Now coming to gymnosperms. Gymnosperms are present in land, but they are mostly found on the areas where you see extreme conditions like xerophytic. ठीक है, वो होते तो है लैंड पे, बट ये एक्सट्रीम कंडीशंस में ज्यादा रहते हैं. Okay, which are the extreme conditions? Like less availability of water, high temperature. Okay, so high temperature. So because of this, there is also possibility of sunken stomata. Okay, you will see the sunken stomata. Okay, if you don't know what is stomata, देखो बेटा हर leaf में, in every leaf there are some stomata present on the both of the spaces. ठीक है, जो ये जो dorsal है, एक लीफ है बेटा, लीफ के ऊपर जो है वो dorsal plane है, then ventral plane है. So what happen on both the planes? There will be presence of stomata which look like this. Okay, which look like this, which are reniform shape. Okay, so these stomata help in the exchange of gases and they also help in the transpiration. Water excess अगर water है plant में तो वो उसको बाहर निकालेंगे और exchange of gases. Okay, तो जब transpiration होगा, excess water जब जाएगा तो plant के अंदर से water जाता है ना, तो अब समझो जब ज्यादा ही स्टोमाटा होंगे then there is a more chance of having transpiration. But in the case of gymnosperms, they are usually found where water is less. There we don't want transpiration to occur. So that is why you will be seeing sunken stomata. Sunken stomata मतलब कुछ ऐसा होगा, मतलब एकदम सिकुड़ा हुआ stomata. Okay, like closed, sunken. Sunken मतलब एकदम shrinked. Okay, sunken stomata will be seen and leaves will be not broad like this. They might be needle shaped. ऐसे needle shaped होंगे. Take example of pinus. Okay, pinus के आप देखोगे. Okay, the leaves are adapted to look like a needle shaped leaves. Okay, so why to avoid transpiration? क्योंकि water पहले ही बहुत कम है, हमको और ज्यादा water lose नहीं करना है. तो hence gymnosperms are mesophytes, but they show xerophytic characters. Hence you will be considering 3 as the option. Clear? Now you will see here gymnosperms are xerophytes in nature due to presence of thick bark, thick hypodermis, thick cuticle, scales leaves. Scale leaf मतलब वही मैंने अभी बताया ना, जो बहुत scale life leaf होते हैं. Usually leaves will be like this. Okay, but to avoid transpiration they will be scale life like leaves. Okay, then sunken stomata. I had told stomata are much more sunken and there is a presence of transfusion tissue. ये जो भी बताया गया है ना, all of this you will study this in the anatomy. Okay, anatomy of flowering plants में आप ये सारे ही देखोगे. Where is hypodermis, where comes cuticle, everything you will study there. So have some patience. Okay, so but अभी के लिए मैंने sunken stomata explain कर दिया है. To avoid transpiration, the leaves will be sunken or scaly like. Okay, so in some cases leaves are modified into needle like or scale like or small leathery, for example pinus. These are adaptations to combat water unavailability in the surrounding, and as they're present in the extreme high temperature conditions, we can be calling these as xerophytes. Okay, now which type of algae is found in coralloid roots? Coralloid roots में आप कौन सा algae देखते हो? Okay, which is the algae that you see? I'm going to launch the poll now. Please make sure that you answer in the poll. I have launched the poll. Okay. So as I have seen, many of you have chosen some options. So let us see if those are correct or not. Okay. So which type of algae is found in coralloid roots? For those people who don't know what is coralloid roots, so in gymnosperms, okay, in gymnosperms, there is a species we call it as cycas. Okay, there's a species we call it as cycas. So cycas का जो root है, okay, cycas root is usually tap root system. Okay, it is tap root, but it has an association. Okay, cycas root has an association of blue-green algae. Okay, blue-green algae are also called as cyanobacteria. ठीक है, तो ये association है which helps in the
nitrogen fixation. Okay, which helps in the nitrogen fixation, and these kind of roots are called as coralloid roots. Okay, we call them as coralloid roots. Similarly, another species of gymnosperm is pinus. Okay, pinus. Okay, even pinus root is taproot. Even this is taproot, but it doesn't have algae with it. It has fungi. Okay, there's an association of fungi with the pinus root, and we call it as mycorrhiza. Okay, mycorrhiza, we call it as mycorrhiza. So how does mycorrhiza help in the pinus root? Okay, mycorrhiza is not, is a type of fungi which spreads very deeply inside the soil. Soil में बहुत deep तक अंदर जाता है, and it helps in the lot of absorption of nutrients. ठीक है, बहुत सारे nutrients को absorb करता है and then minerals को absorb करता है. That helps in the further more better growth of pinus tree. तो इससे क्या होता है, पाइनस ट्री और अच्छे से ग्रो होता है. इट इज अ काइंड ऑफ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक मींस आर बोथ आर बेनिफिटेड बाय इट. देखो, माइकोरेजा से पाइनस को बेनिफिट हो रहा है और पाइनस माइकोरेजा को शेल्टर दे रहा है. ओके, माइकोरेजा is getting shelter, that fungi is getting shelter. Okay, that is symbiotic. Even coralloid is a symbiotic. Okay, you will see here coralloid roots are specialized roots that are present in cycas. They're associated with nitrogen fixing cyanobacteria. Okay, nitrogen fixing cyanobacteria. The coralloid roots contain blue green algae. What is the another common name of blue green algae? Can anybody tell me in the chat box? बहुत बार बोला है मैंने, कल भी आपको बोला है, द कॉमन नेम ऑफ ब्लू ग्रीन algae. ओके, सो यू शुड नॉट कंसिडर इसमें अलगी है तो आप बोलोगे कि हाँ मैम ये अलगी है. नहीं, इसके नाम में अलगी है, बट दिस इज नॉट अलगी, इट इज एन बैक्टीरिया. इट्स अ cyanobacteria. Okay, it's a cyanobacteria and this blue green algae belongs to bacteria, not algae. ठीक है, ये बैक्टीरिया है बेटा, algae नहीं है. तो कौन सा बैक्टीरिया है? Nostoc and Anabaena. Okay, they are Nostoc and Anabaena, which helps in the fixation of nitrogen. Along with that, they also help in producing some amino acids like asparagine and citrulline. Okay, so this much you need to remember about cycas. So now you tell me which is the correct answer to this. Blue green algae is the correct answer. Okay, for those people who have chosen one as their answer, no beta. Okay, green algae, you can take the example of chlorella. Okay, so chlorella, okay, spelling कुछ गलत हो गया. देखो बेटा, chlorella is a type of blue green algae. Okay, but it is not doing any kind of nitrogen fixation. Nitrogen fixations are only done by blue green algae. Okay, so hence you will be choosing 2 as your answer, not green algae and blue green algae. Clear? तो ये तो easy था बेटा, समझ आ गया. Now coming to next question. Characteristics of angiosperm which distinguish them from gymnosperm. You have to understand the options, read them and differentiate. You have to differentiate between the characters of angiosperm with gymnosperm. तो ऑप्शन में दिया गया है बेटा जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स विच आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म. Okay, I'll give you some time, read the options. After some 30 seconds I will launch the poll. Okay, okay, easy, it's easy, not a big deal. I have launched the poll. Please make sure that you answer in the poll. And the YouTube students, what are you doing? Please answer in the chat box. मतलब देखो सारा chat box मैंने open करके रखा है, live chat it is empty. Okay, write something, even though it is wrong. We are not going to judge you. At least write your option, which you think as a correct option. Okay. Okay, then I'll end the poll. I can see most of you are not answering. जो लोग Zoom में है वो लोग भी poll में answer नहीं कर रहे. क्यों बेटा, क्या आपके स्कूल में syllabus नहीं हुआ है? Write down in the chat box, is Plant Kingdom not finished in your schools? Write it down quick. I want everyone to answer to this, even the YouTube students. Has Plant Kingdom completed in your schools? Plant Kingdom chapter. Right, yes or no?
problem with screen sharing? I don't think there is any problem. Janvi Pathan. Okay, I'll do one thing. I'll reshare it because I am sharing this in the YouTube also. In the YouTube, it's looking very clearly. YouTube में तो कोई problem नहीं है. I'll do one thing. I'll reshare it. Okay, I'll reshare it. Okay. Still problem is there with the screen sharing. I can see there is no problem with sharing of screen. Okay, I have. All right. So I didn't get my answer. Nobody has answered for what I asked. Plant kingdom हुआ है या नहीं? खैर छोड़ो. Okay. Now, characteristics of angiosperms which distinguish them from gymnosperms. So, question says in the option they have given the characteristics of angiosperms. They have given the characteristics of angiosperms. Okay, so you have to choose which one of them is distinguished with the gymnosperm. Okay, so presence of fruits and flowers. Okay, fruits and flowers. So fruits and flowers are present in angiosperms. Okay, fruits and flowers are present in angiosperms, but not in gymnosperm. Okay, double fertilization is seen in angio. In angiosperm, there only we will see the triploid endosperm. But in the case of gymnosperm, endosperm is haploid. Okay, companion cell. एक काम करते हैं, ये देख लो बेटा आप. You see this. Okay, vessels are absent in gymnosperms. Okay, vessels are present in angiosperms. Okay, phloem lack companion cells. Okay, phloem lack companion cells in gymnosperms and companion cells are present in angiosperms. Please remember, vessels and companion cells are present in angiosperms, whereas gymnosperms, vessels and companion cells are absent. But tracheids are present. Okay, tracheids दोनों में है. Tracheids are present in both gymno and angio. Vessels are absent and companion cells are absent in gymno. Okay, ovules are naked. Here, ovules are enclosed within ovary. Okay, pollination is by wind. Here, there are many pollinating agents. Okay, angiosperms के अंदर there will be many pollinating agents. Double fertilization is absent in gymno. I told you, right? There is no double fertilization in gymnosperms. Whereas in angiosperms, you will see double fertilization. What is double fertilization? Which will give syngamy and triple fusion. Syngamy and triple fusion. Okay. So that is double fertilization. Endosperm is haploid in gymnosperms, whereas endosperm is triploid in angiosperms. Fruit formation is absent. Here, fruit formation is present. Flowers are absent. Flowers are present. Okay. So these are the differences, main differences that you need to remember. Okay. So now here see, okay, here you will see the characteristics of angiosperms which distinguish them from the gymnosperms. Yes, you can see here presence of fruits and flowers are present in angio but absent in gymno. Gymno में बिल्कुल नहीं थे, angio में थे. तो हाँ, this is correct one. ये distinguishing character है. Double fertilization and triple endosperm. Yes, double fertilization is absent in gymno but present in angio. Triple endosperm is present in angio, absent in gymno. Absent मतलब वहां पे haploid है. तो ये भी distinguishing character है. Now, companion cells are present in phloem and xylem. In xylem you will be seeing vessels in angiosperms, but both of these are absent in gymno. So 3 is also distinguishing character. So answer for this question is for all of the above. Okay, beta, this is very important table. Please try to remember it. Okay, especially talking about vessels and companion cells, and then fruit and flower, then double fertilization, then ploidy of endosperm. Okay, now as I have told you in the last question, you will be answering this question based on that. Okay, which is totally absent in gymnosperm? Which is totally absent in gymnosperm? अभी हमने चार्ट देखा, अभी हमने चार्ट देखा. तो सर, I will be launching the poll now. I want everyone to answer in the poll.
Yes, which is totally absent in gymno. All right. Okay, I have got my answer. So I'm going to end the poll now. So let us see here. So what I just told you, companion cells, okay, companion cells of phloem, okay, companion cells कहाँ पे होते हैं बेटा? phloem में होते हैं. Okay, then vessels of xylem, okay, vessels of xylem. So I know that you don't remember, या फिर आपने पढ़ा होगा या नहीं पता नहीं मुझे. अभी anatomy में तो आप आके पढ़ोगे बेटा. Okay, anatomy of flowering plants के अंदर you will be studying these structures. What you will see in phloem. In phloem you will see sieve tubes. Okay, you will see sieve tubes. You will see companion cells. Okay, you will see companion cells. You will see phloem parenchyma. You will see phloem fibers. Similarly, in xylem, you will be seeing vessels. Okay, you will see tracheids. Okay, ये सारे structures बन के xylem बनता है, tracheids. Then xylem parenchyma. Okay, xylem parenchyma. Okay, then xylem fibers. So like this, these four structures together make phloem and these four structures together make xylem. ठीक है बेटा. तो अब क्या होगा, देखो जो कंपेनियन सेल फ्लोएम में है, दिस इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म बट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म. सिमिलरली दिस वेसल इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म बट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म. तो ट्रेकिड्स जो है वो दोनों में ही है. ठीक है, तो नाउ यू हैव टू सी which is totally absent in gymnosperm. Vessels are absent in gymnosperm. Tracheids are present. Sieve tubes are present. Parenchyma तो present होंगे ही. So one is the option here. Okay, vessels are absent. So you'll see here gymnosperms have xylem tracheids, but they still don't have companion cells in phloem like angio. They lack vessels except Netum species. Please remember, all gymnosperms lack vessels except Netum. Okay, except Netum. Okay, Netum is the species name that you need to remember, or Nettales. Okay, because they possess वेसल. ठीक है, तो नीटम एक एक्सेप्शन है बेटा. नीटम एक में ही आपको वेसल देखने मिलेंगे, बाकी सारे जिम्नोस्पर्म में दे लैक वेसल्स बट दे डू हैव ट्रेकिड्स. ओके, इनफैक्ट ट्रेकिड्स constitute 90 to 95% of wood in gymnosperms. Okay, now coming to next question. The stamen in angiosperm is homologous to which part in gymnosperm and pteridophyte? The stamen in angiosperm is homologous to which part in gymnosperm and pteridophytes? Options are microsporangium, microsporophyll, megasporophyll, and male gametophyte. Okay, I have given enough time. Now I am going to launch the poll. Please answer in the poll, okay? See, you need not to worry. Even though you choose wrong answer, it doesn't matter. It doesn't matter, beta. You don't need to worry about it. Okay, you just choose some answer. You have to choose some answer, that's all. Okay. All right. So I have some answers here in the poll. I'm ending the poll now. Okay. Clear. So देखो बेटा. So what are stamens in angiosperm? You have seen the flower structure of angiosperms, है ना? आपने hibiscus तो सारे ही बच्चों ने पढ़ा है बेटा. So what do you see in hibiscus flower? Okay, so consider this is a hibiscus flower. Okay, hibiscus flower. So it is having structure like this, and here you will be seeing the stamens. Okay, so this is stamen. Okay, so these are stamen, and stamen contains what? In stamens there will be anthers. ठीक है, stamens के अंदर anthers होंगे, anthers के अंदर होंगे pollen grain. Okay, you will see pollen grain. Okay, now so you have to choose the homologous structure. Homologous मतलब similar structure that is present in gymno and pteridophyte. Gymno and pteridophyte. Okay, now देखो बेटा,
एक सिंपल मैं आपको चीज बताती हूँ. ओके, आई विल टेल यू सिंपल वन. So first you have to choose like what is the structure in pteridophytes. Okay, आप देखोगे pteridophyte में क्या होता है बेटा. Pteridophyte में you will see, okay, you will see sporophyll. Okay, you will see sporophyll in pteridophytes. So these sporophylls will be present beneath the leaf. ठीक है, आप कंसिडर करो ये लीफ है, तो लीफ के नीचे होते हैं बेटा यहाँ पे, and these are called as sporangium. Okay, these are called as sporangium, and these sporangium have spores in it. Okay, they have spores in it, so these will produce the spores. So this is going to happen in the case of pteridophytes. Okay, this is going to happen in the case of pteridophytes. Okay, pteridophytes. तो pteridophytes को हटा दो. Now you come to the gymnosperm. ठीक है, अभी gymnosperm में क्या होता है, you will see two types of okay cones. ठीक है, ये जो स्पोरोफिल होते हैं ना बेटा, ये जो स्पोरोफिल्स हैं वो एक कोन में भी अरेंज करते हैं, टेरिडोफाइट में भी, एंड वी कॉल इट एज स्ट्रोबाइलाई. ठीक है, देखो बेटा, आई विल टेल यू समथिंग. इन टेरिडोफाइट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स. ओके, वन इज माइक्रो लीव्स व्हिच यू विल सी इन सेलाजिनेला. अब सेलाजिनेला में देखते हो छोटे लीव्स. ठीक है, और कुछ आते हैं बड़े लीव्स जो आप देखते हो कुछ फर्न्स में. ओके, फर्न्स में देखते हो, दैट इज टेरिडोफाइट. ओके, टेरिडोफाइट का खत्म हो गया. उसके अलावा यू विल बी सीइंग सम कोन लाइक स्ट्रक्चर्स इन टेरिडोफाइट्स. आप टेरिडोफाइट्स में भी छोटा छोटा कोन देखोगे, एंड दोज विल हैव स्पोरोफिल्स इन देम. सो स्पोरोफिल का क्या है, लीफ को हम बुलाते हैं स्पोरोफिल बेटा. फिल कंसिडर्स टू लीफ. Please remember, wherever you see the word fill, that is leaf. Okay, तो sporo means spore bearing leaf. तो spore bearing leaf के अंदर sporangium है, वो एक sac है, उसके अंदर spores मिलेंगे. So this is all about the pteridophytes, and these are special kind of structures. They are present in cone. ठीक है, तो इतना खत्म करो आप टेरिडोफाइट्स में. नाउ कमिंग टू जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स में यू विल बी सीइंग two different cones. One is male cone. What you are seeing here is a male cone. ठीक है, ऐसे मेल कोन फीमेल कोन आप टेरिडोफाइट्स में नहीं देखोगे. ओके, so here you will be seeing male cone and female cone. Clear? So this is male cone and female cone. Now what do you see if you take the section of this male cone? If you take the section of this male cone, what you are going to see here, there will be some microsporophyll. Okay, microsporophyll is again compared to the leaf. It is a type of leaf which contains a microspore. Okay, fill, leaf. Okay, then inside the microsporophyll there is a presence of microsporangium. इसके अंदर आपको मिलेगा microsporangium. Microsporangium के अंदर है pollen grains. Okay, इसके अंदर है pollen grains. तो यहाँ पे देख लो. So this is microsporophyll, which is considered as leaf. This is microsporangium, inside which you will see the pollen grain. This is in the case of male. So what happens in the case of female? Even in the female, you will see megasporophyll. Okay, you will see megasporophyll in the case of female cone. Megasporophyll है, उसके अंदर आप जो यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये वोव्यूल है. Okay, this is vovule. Okay, this is ovule. Now आप अगर reproduction देखोगे तो what happens, this pollen grain will disperse through the air current. Air current के through ये disperse करेगा, and pollen grain के अंदर क्या होगा बेटा, you will see the formation of gametes. Okay, pollen grain is not a gamete. Pollen grain is a male gametophyte. ये male gametophyte है बेटा. pollen grain के अंदर होता है male gamete. ओके, तो ये जो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है वो वोव्यूल के अंदर जाके पॉलिनेशन करके यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन. सो नाउ यू डोंट नीड दैट मच, यू नीड टू सी जस्ट माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पोलन ग्रेन्स. तो ये जो है विच इज सिमिलर टू स्टेमन. तो यही चीज मैंने बताया ना बेटा, जो माइक्रोस्पोरोफिल इज सिमिलर टू स्टेमन. व्हाई? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू स्टेमन हैव. ओके, स्टेमन के आप अंदर देखोगे बेटा एंथर. ओके, एंथर के अंदर यू विल सी माइक्रोस्पोरेंजियम अगेन. देयर आल्सो यू विल सी माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के अंदर आपको दो मेल गैमीट मिलेंगी, दो मेल गैमीट्स मिलेंगी. सो हियर यू विल सी द स्टेमन इज होमोलॉगस टू द माइक्रोस्पोरोफिल. Okay, so stamen is a male thing that we're talking about, male. So here you will see mega को तो cancel कर लो because mega is referred to female.
Okay, male gametophyte is nothing but pollen grain, both in the case of gymnosperms and angiosperms. We are not talking about pollen grain. Okay, now coming to microsporangium. Microsporangium is a sac structure inside which there will be formation of pollen grain. Okay, even this is wrong. Microsporophyll is that structure which holds the pollen grain or gametes. Clear? तो ये हो गया बेटा आंसर. इसको समझाने के लिए आपको मैंने इतना सब कुछ घुमा फिरा के लाइन में. ठीक है, तो बेटा वी आर गोइंग टू सी समथिंग मोर अबाउट जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कुछ टॉपिक्स में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ लाइफ साइकिल. ओके, आई हैव बॉट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. ओके, so in gymnosperm you need to remember some species name. Okay, किस किस का नेम याद रखोगे बेटा? Cycas, especially to remember colloid roots. You will remember Pinus. Okay, remember the Pinus. Pinus is having the association of fungi, that is mycorrhiza. Okay, then you will see Sicova. Sicova is the tallest tree on the earth. Okay, then you will remember Cedrus. Okay, Cedrus याद रखना. Okay, तो Cedrus हो गया. और कोई है बाकी? ओके, बस इतना याद रख लो, काफी है. ओके, नाउ कमिंग टू हियर, दिस इज अ mature sporophyte. Let me tell you something. Algae, in algae, the main plant was gametophyte. Okay, main plant was gametophyte. In bryophytes, main plant body was again gametophyte. In pteridophyte, the main plant body was sporophyte. In gymnosperms, the main plant body is again sporophyte. देखिए टेरिडोफाइट से बेटा स्टार्ट हो जाता है स्पोरोफाइटिक डोमिनेशन. ओके, तो टेरिडोफाइट्स में भी आप मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट देखते हो, विच इज डिप्लॉयड. इवन इन जिम्नोस्पर्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट मेच्योर स्पोरोफाइट. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल बेटा. ओके, जिम्नो लाइफ साइकिल. क्लियर? तो अब क्या होगा, अभी हम ले रहे हैं बेटा पाइनस का एग्जाम्पल समझो. वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पाइनस. ओके, पाइनस एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर दोनों ही फीमेल एंड मेल कोन होते हैं. बोथ cones are present in Pinus. Okay, Pinus के अंदर दोनों ही कोन है. So one cone I have shown here. This is male cone. This is female cone. Male cone and here female cone. Okay. So male cone में आप क्या देखोगे? Microsporophyll. And in the ovulate cone or the female cone, you will see megasporophyll. So that fill, leaf-like structure will contain microsporangium. And यहाँ पे आप देखोगे megasporangium. यहाँ पे होंगे दो megasporangium. Okay. So that is megasporangium. Okay, so both the sporangiums will undergo meiosis, which is reductional division. मैंने आपको बहुत बार बताया है बेटा, meiosis is a reductional division. Why? Because chromosome number will be halved. Okay, if 2n है तो n बनता है meiosis में. ठीक है, तो microsporangium was diploid. Both cases meiosis होने के बाद pollen बने. This is haploid. Okay, that is haploid. Now, so these pollen and this megaspore will again continue to grow. Pollen क्या बनेगा? Male gametophyte. I have told you, right? Male gametophyte is nothing but pollen grain. But inside male gametophyte, you will see the gametes. ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे बेटा, अभी ये gametes में grow नहीं हुआ है. But inside pollen grain, you will see male gametes. Okay, so those male gametes will fuse. Okay, they will fuse with the right. So they will fuse with the archegonium. फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होगा बेटा? मेगास्पोर्स होते हैं. यूजुअली मायोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स होते हैं बेटा. ओके, 4 मेगास्पोर्स होते हैं. उन चारों में 3 डीजेनरेट कर जाते हैं और एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होता है. तो वो एक मेगास्पोर कंटिन्यू करता है फॉर्मिंग अ फीमेल गेमेटोफाइट. इनसाइड फीमेल गेमेटोफाइट यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ 2 आर्किगोनियम. ठीक है, 2 आर्किगोनियम होते हैं. तो उनके बाद ये आर्किगोनियम से egg cell मिलेगा, तो that egg cell and male gametes will fuse to form the fertilization, that is syngamy. After fertilization you will see embryo. Embryo develop करेगा to give, okay, to give the seed. Okay, please remember you will see the winged seed in Pinus. ठीक है, winged seed. तो similar को मैंने यहाँ पे ऐसे दिया है, देखो Pinus sporophytic generation, that is 2n. Male cone, female cone, again 2n. Microsporangium. माइक्रोस्पोरेंजियम से पहले फिल आएगा. ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल. माइक्रोस्पोरोफिल. ठीक है, बिकॉज फिल के ऊपर ही तो स्पोरेंजियम होता है, तो यहाँ पे भी आप फिल लिख लो. ओके, मेगास्पोरोफिल.
So microsporangium, megasporangium, inside which there will be microspore mother cells. यहाँ पे होंगे megaspore mother cells. So these mother cells will undergo meiosis. ये undergo करते हैं meiosis, that is reductional division, to give the microspores. ठीक है, तो मेगास्पोर में क्या होगा, रिडक्शनल डिविजन होगा, among which we will see 4 megaspores. In 4 megaspores, 3 are going to be degenerated, ओनली वन इज फंक्शनल. तो वो एक फंक्शनल जो है वही तो एम्ब्रियोसैक बनता है. तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आर्किगोनियम. ओके, आर्किगोनियम के अंदर आपको मिलेगा एग. Clear? So this egg will fuse with the male gamete. This egg will fuse with the male gamete, which is syngamy. Process of fertilization. Ultimately, you will get the embryo. Embryo will grow into a seed that will form the another pinus plant. Okay, so this is about life cycle of gymnosperms that you need to remember. ठीक है, बस मैंने करवा लिया, इसका आंसर तो क्लियर है ना? Okay. Now, most angiosperms show monospory, bispory, trispory, and tetraspory. I know you might have not heard this. But ये questions कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने ऐड किया है. ठीक है, बस आप समझते जाओ बेटा मैं क्या पढ़ा रही हूँ. Okay, I know you might not have heard, but let's come back here. Okay, तो as I was telling you, there will be. Okay, तो यहाँ पे देख लो बेटा, मेगास्पोरेंजियम है. ठीक है, so megasporangium will be there. So inside megasporangium, you will find some special cells. We call them as megaspore mother cell, MMC cells. We call them as megaspore mother cells. These megaspore mother cells are diploid. Okay, and they will undergo meiosis. जब meiosis होगा तो reductional division होगा. ठीक है, and meiosis always occur in 2 stages. You will study this in the upcoming chapter. Cell division and cell cycle में आप देखोगे meiosis will occur in 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. ठीक है, जब meiosis 1 होगा तो complete करके 2 haploid cells आएंगे. जब meiosis 2 complete हो जाएगा तो 4 haploid cells आएंगे. ठीक है, so as I have told you here. तो इसमें क्या होगा बेटा, meiosis हो जाने के बाद you will get 4 megaspores. Okay, among these 4 megaspores, 3 get degenerated. Only one is, functional. So this functional one is the surviving megaspore. So this is common. ये जो दिखाया है ना, ये common है बेटा both in gymno and angio. अभी अभी जो मैंने बताया ना पीछे. Okay, तो gymno and angio में ये दोनों common है. Okay, so that's what I have shown you in the previous slide. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में इतना डिटेल से नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे दिखा रही. ठीक है, तो एमएमसी सेल से मायोसिस हो जाने के बाद यू विल गेट मेगास्पोर. ओके, सो मेगास्पोर के आगे और ज्यादा है बेटा. ओके, इसके आगे और ज्यादा कहानी है. ओके, यू विल स्टडी दिस इन द अपकमिंग क्लासेस. अभी इतना टेंशन मत लो. ठीक है, इसके आगे और भी बहुत कुछ पढ़ना है. ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे आप देख लो, व्हाट यू नीड टू आंसर हियर इज, आपको यहाँ पे क्या देखना है. सी, MMC cell, megaspore mother cell. After meiosis, you will get 4 cells. ठीक है, अब क्या हो गया, 4 में 3 degenerate हो गए. Only 1 remains functional. With the help of only 1 megaspore, you will find the entire mature embryo sac. ठीक है, आपको पूरा जो mature embryo sac बनता है, the entire embryo sac will be formed by single megaspore. If what happens in the bisporic, what happened, 2 are getting degenerated, 2 get degenerated and 2 are functional. Okay, 2 are functional megaspore. So this is called as bisporic. Okay, this condition is called as bisporic. Clear? Now coming to tetrasporic. Tetrasporic में क्या होगा, no degeneration at all, no degeneration of megaspore, all are functional. This happens in the case of Drusa. ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, most of the angiosperms are monosporic.
मोनोस्पोरिक, ठीक है, ये आंसर है। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, आप जब टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हो, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, मेच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, वोविल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है ना, तो वो यही पढ़ते हो आप। यू विल स्टडी द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक ओनली। व्हाई डू यू स्टडी दिस? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैव मोनोस्पोरिक कंडीशन। बेटा इसका रीजन भी है, इसका रीजन भी है, क्या है मैं बताती हूँ। ओके, 3 गेट डीजनरेटेड, ओनली 1 इज फंक्शनल, राइट? तो इनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, दे विल से ओके, एक ही एम्ब्रियो सैक बने, बट वो फंक्शनल हो और वो अपना काम बहुत अच्छे से करे। तो दीज फीमेल्स आर नॉट ग्रीडी, दिस फीमेल्स आर नॉट ग्रीडी कि हाँ मुझे भी बनना है, मुझे भी फंक्शनल बनना है, हम सारे फंक्शनल बन जाएंगे, बट यहाँ को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा बेटा? You tell me, from where does the nutrition comes? Okay, it's very fine to provide the nutrition in these all process. ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेगास्पोर के बाद मेच्योर एम्ब्रियोसैक बनेगा, एम्ब्रियोसैक के अंदर एक्सेल होगा, एक्सेल हो जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द एंटायर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म विल हैव टू फॉर्म। जब तक एंडोस्पर्म नहीं आता तब तक हमको न्यूट्रिशन मैनेज करना है। जब एंडोस्पर्म आएगा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा अलग से फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एंडोस्पर्म देगा, बट उससे पहले तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, बिकॉज ऑफ कि न्यूट्रिशन यहाँ वहां डिस्ट्रीब्यूट ना हो, एक ही बने और बहुत सही से बने, बहुत अच्छा बने। ठीक है, तो दैट इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ। Now, most angiosperms you will see that is monospory. Clear? और the monosporic. ये समझ में आ गया आपको? Now, double fertilization is exhibited by gymnosperms, algae, fungi, angiosperms. This is very easy question. I think we have studied this in your 10th classes also. आपने 10th में भी इसको पढ़ा है ना? I'm going to launch the poll now. Please make sure that you answer in the poll. It's very easy question. Yes. I can see you have chosen correct option. तो ये easy था, है ना बेटा? तो double fertilization क्या है? We will see now. तो in the previous slides we have seen double fertilization is absent in gymnosperms and present in angiosperms, है ना? तो double fertilization में होता क्या है बेटा? Double fertilization includes 2 processes. One is syngamy and another one is triple fusion. एक में होता है syngamy और दूसरे में होता है triple fusion. So syngamy में होता है क्या बेटा? One sperm cell, यहाँ पे sperm यूज नहीं करूंगी मैं यूज करूंगी gamete. Okay, तो here you will see one male gamete. Okay, one male gamete will fuse with egg to form zygote. To form zygote. This zygote will eventually form the embryo. तो इसी embryo से तो seed बनता है ना? तो embryo से ही seed बनता है। Now this triple fusion में क्या होगा? This triple fusion it will have one more male gamete. देखो बेटा, एक pollen grain के अंदर angiosperm में there will be 2 male gametes. Inside one pollen grain of angiosperms you will see 2 male gametes. So here one goes with egg, fertilizes with egg. Another male gamete it fuses with these cells which are present in the center. आप देख रहे हो इनको बुलाते हैं polar nuclei. तो इनके साथ फ्यूज करता है, तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके इट विल फॉर्म पेन. ओके, पेन का क्या मतलब होता है? पेन. ओके, इट विल फॉर्म पेन. ठीक है, तो ये नहीं बेटा, ये सिंपल है. ओके, तो ये फॉर्म करता है पेन विच इज अगेन ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. तो पेन से आपको मिलेगा एंडोस्पर्म. Okay, you will find endosperm. So this endosperm is triploid. It will be triploid. Zygote is diploid. Embryo will be diploid. Now this endosperm till the development of complete embryo, तो पूरा embryogenesis में nutrition endosperm ही देता है embryo को. तो सारा जो nutrition provide होता है वो endosperm देता है embryo को. Okay, so polar nuclei. Okay, polar nuclei fuse with one male gamete to give the pen. ठीक है, तो पेन बेटा ये शॉर्ट फॉर्म है.
ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप जाके अपने सीनियर्स को पूछो। यू आर 11th क्लास राइट, आपके साथ 12th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, आप पूछो ट्रिपल फ्यूजन में पेन आता है, इसका फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो, तो पेन बनेगा, पेन से फिर एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के अलावा किसी और में आपको नहीं दिखेगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन, इजी क्वेश्चन, इसको हमने कल कर लिया था। अगेन आई लॉन्च द पोल। See, you need to remember these examples, okay? आपको सारे ही आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। कोई भी आंसर नहीं कर रहा पोल में, पता नहीं। खैर, तो आप देख लो बेटा, आई हैव टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, एक होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देन कम्स डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसके बारे में मैंने कल बताया है। एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन है? हैप्लॉन्टिक में आते हैं सारे के सारे अलगे, डिप्लॉन्टिक में आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आते हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आते हैं। ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ओके, कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस क्या हैं? सो कंसीडर, ओके, ये 3 अलगे हैं बेटा, आई एम गोइंग टू राइट हियर 3 अलगे, बट दे आर नॉट फ्रॉम हैप्लॉन्टिक। अलगे को तो हैप्लॉन्टिक में होना चाहिए, बट ये हैप्लॉन्टिक नहीं है। somebody has wrote something in the chat. yes, very good, primary endosperm nucleus. ओके, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने अभी होमवर्क कर लिया, अभी होमवर्क कर लिया, वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पे PEK, पेक, ठीक है, आपको याद रखना है, जरूरी है। ओके, तो याद रखना बहुत 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 जरूरी है। चलो, तो अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये आखिर है क्या, ये आखिर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्टोकार्पस, केल्प्स, और यहाँ पे लिखूंगी ऑप्शन में जो है वो है पॉलीसाइफोनिया। ये सारे तो अलगे हैं बेटा, ऑल दीज आर अलगे, बट दे डोंट बिलोंग टू हैप्लॉन्टिक, instead they belong to haplodiplontic life cycle, instead they belong to haplodiplontic life cycle। और डिप्लॉन्टिक में भी एक अलगे है फ्यूकस, ये एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो अब चलो देखते हैं, स्पाइरोगैरा इज अलगे। ठीक है, तो ये हो गया हैप्लॉन्टिक। ओके, दिस इज हैप्लॉन्टिक, नॉट द ऑप्शन। साइकास तो जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म है, दिस इज डिप्लॉन्टिक, नॉट द ऑप्शन। फ्यूकस, फ्यूकस अलगे है, लेकिन आता है डिप्लॉन्टिक में, अभी अभी मैंने बताया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो पॉलीसाइफोनिया ये भी अलगी है, बट इट कम्स अंडर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, पेक, याद रखो, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस एंड केल्प, these are algae but they come under haplodiplontic life cycle. Now next question, grouping of algae is based on, grouping of algae is based on, इस पे मैं पोल लॉन्च नहीं करूंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फूड रिजर्व, नो, फूड रिजर्व में नहीं। कॉलोनी फॉर्मेशन, नो। शेप, नो। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, आपने पढ़ा ही है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग और द अलगे इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पिगमेंट्स, इसीलिए तो इनका नाम ने दिया है बेटा क्लोरोफाइसी, विच मीन्स ग्रीन algae, फियोफाइसी विच मीन्स ब्राउन algae, रोडोफाइसी रेड algae, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ही है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजांथिन, इन रेड algae क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, based on the pigments we have classified them. Now coming to next question, chlorophyll A, chlorophyll D and phycoerythrin occur in, अगर आपने अभी अभी सही से टेबल देखा होगा ना, तो आप ये आंसर बहुत जल्दी कर लोगे। यहाँ पे अभी भी पीछे एक स्लाइड पीछे मैंने टेबल लगाया था, है ना, रिमेम्बर? So these pigments are present in which of the group or which of the class? क्लोरोफाइसी में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी होते हैं वहां पे। ठीक है, बैसिलिरोफाइसी इज नो, ये दोनों तो बेटा इनको भुला दो। ओके, बिकॉज दे आर बैक्टीरिया।
ये तो बैक्टीरिया है, वी आर टॉकिंग अबाउट अलगी हियर, ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन ये सब अलगे है, तो इसका ऑप्शन है बेटा रोडोफाइसी। ये अभी अभी मैंने काढ़ा निकाला था ना, देखो क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन, रोडोफाइसी इज रेड algae, ठीक है। नाउ सी दैट्स व्हाट आई हैव गिवन हियर, दिस इज योर आंसर। नाउ bryophytes have what? Archegonia. Yes, it do have Archegonia. Dominant gametophyte. Yes, I have told you bryophytes का जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट ही तो है। एंड पैरासिटिक स्पोरोफाइट, यस, इसको तो मैं कल चीख चीखे मैंने अपना गला फाड़ लिया था। पैरासिटिक ही होता है स्पोरोफाइट, क्यों? क्योंकि एंटायरली फॉर द न्यूट्रिशन एंड फॉर द शेल्टर एवरीथिंग स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है। थैलाइड बॉडी, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर। बेटा ये कल हमने पढ़ लिया था तो इसलिए इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ। मैंने आपको दिखाया था बेटा मार्केंशिया, ओके, इनसाइड मार्केंशिया यू विल सी एन अर्कीगोनिया, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, है ना, आर्किगोनिया, एंथेरिडिया, रिमेम्बर आर्किगोनिया में फीमेल होगा, एंथेरिडिया में मेल होगा, थ्रू द हेल्प ऑफ वाटर, ओके, एंथेरोजॉइड्स विल स्विम, कम टू आर्किगोनिया एंड फ्लास्क शेप्ड वहां पे होते हैं, एंड इट दे विल फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट, ये सब चीजें कल देख ली थी। Cycas has two cotyledons but is not included under angiosperms because it has, तो बेटा साइकास में भी दो कॉटिलिडन्स हैं, है ना, just like angiosperms. Angiosperms also have, you know, two cotyledons and even sometimes single cotyledons. But still, why they are not included under angiosperms? Still इनको angiosperms में क्यों नहीं include करा जाता? तो यहाँ पे देख लो, gymnosperm seeds are multicotyledonous and the number of cotyledons range from 2 to 24. Okay, so angiosperm seeds have only one or two. One are called as monocotyledons, di are called as dicotyledons. So if a seed has two cotyledons like cycas में दो cotyledons होते हैं, it may belong to gymno or angio. बुला तो सकते हैं कि हाँ भाई ये gymno या फिर angio में है, okay? चलो, then in cycas the seed does not occur inside the fruit but lies naked or exposed. ये हमको पता ही है, okay? Exposed fruit होगा. Before fertilization the formation of seed ovule is naked, this also we know. So these are all the characteristic features of gymnosperm, hence cycas is a gymnosperm. हाँ पता है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है बेटा, even though cycas has two cotyledons but it is not included under angiosperms because the characteristic feature जो है gymnosperm का, that is naked seed. इसके नेम में ही है बेटा gymnosperms मतलब naked seed which is not covered by fruit, तो वो characteristic feature है, समझ रहे हो? Okay, so this fruit lying exposed or naked without covering, this is the characteristic feature of gymnosperm, hence here naked seed is the correct answer. Okay, so time is done. Thank you for attending. There were still many questions, but it's okay. Thank you so much for attending the class. We'll see you next week. Thank you.